हेलो माय डियर फ्रेंड्स, टुडे वी गोइंग टू टॉक अबाउट दी नर्व इम्पल्स। आज किसके बारे में बात करेंगे? नर्व इम्पल्स के बारे में बात करेंगे, राइट? सो ये नर्व इम्पल्स का जो लेक्चर रहेगा ना, आई वांट टू गिव यू इनटू द टू डिफरेंट सेक्शन। फर्स्ट हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे, एंड सेकंड व्हाट कॉजेस द मेम्ब्रेन पोटेंशियल दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. So before I go ahead, I want to clear one very important doubt, that is what is synapse and what is synaptic cleft. So anyone, can you tell me? Yeah. So when you talk about the synapse, synapse is responsible. First of all, what is synapse? A gap in between the two neuron is called a synapse. The synapse is definitely gap that we talk about. The neuron has to be transfer the impulse very fastly, so they can try with the electrical one. And this electrical one or gap between the two neuron where the electrical signal is going to pass, because very quick action is responsible required there, right? So that is called synapse. But when you talk about the synaptic cleft, that is a gap between the two neuron is filled with a fluid. That is called a synaptic cleft, and that is responsible for the chemical transfer, right? Not electrical one, chemical one. And that is transfer via neurotransmitter like ACH and all. So who is very fast? Electrical one. So हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल्स बहुत ज्यादा होंगे ना? नहीं, that is the thing. This is body use. This is very rarely, but this is a very reliable one. That is synaptic cleft. That is neurotransmitter impulse transfer. Okay, so this doubt is very clear to you right now. Let's move to the what is the nerve impulse. The moment I talk the nerve impulse, it is a depolarization, depolarization wave across, definitely whom, with whom, neuron. बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है. न्यूरॉन कौन सा है? न्यूरॉन टू न्यूरॉन. यस, न्यूरॉन टू द मसल, दैट इज अ effector organ we can talk about. Okay, so depolarization wave that across the neuron, neuron to neuron, neuron to muscle, right? So that's a depolarization wave. So why it is called as a wave? And that is depolarization. Okay, don't do the mistake with repolarization. It's a depolarization. So when you talk about the neuron, न्यूरॉन तो सबको पता है, राइट? क्या मैंने निकाला? ये न्यूरॉन, ये क्या रहेंगे? माइलिन शीथ रहेंगे. अभी क्या होगा? फ्रॉम बॉडी टू द एक्सन, ये ट्रांसफर रहेगा ना, ये इसकी डायरेक्शन रहेंगे, राइट? किसकी? डीपोलराइजेशन वेव, दैट इज कॉल्ड एज अ इम्पल्स. तो ये इम्पल्स ट्रांसमिट होने के लिए व्हाट वी रिक्वायर्ड some permeability and something. So who would discover that? So in late 1930, the neurologist, English neurologist, the Huxley and Hawkins, okay, Hawkins discover this, and they give the theory, and they give us the theory on the basis of permeability, permeability of sodium and potassium ion. So that's a very, very important. And this permeability result into the generation of the electrical signal, or we can say impulse. Okay, and this permeability of the sodium, potassium, and because of that, what happened? The electrical signal is formed. This give rise to the threshold, and this threshold is activate. That is called action potential, right? देखो, नर्व इम्पल्स और नर्वस सिस्टम एक थ्योरी पे वर्क करता है. पूरा होना चाहिए या कुछ भी नहीं होना चाहिए, नन, और समथिंग हैज टू बी देयर. दैट समथिंग इज व्हाट थ्रेशोल्ड, राइट? जैसे कि हम फोटो इलेक्ट्रिकल लाइट में देखा ना, हमने क्या देखा था उस चैप्टर में? एक पर्टिकुलर वेवलेंथ अगर एसेसरी पिगमेंट्स और जो हमारा क्लोरोफिल ए है उसके ऊपर क्या करेगी? अटैक करेगी? नो, नॉट अटैक. Actually what, when it fall on that, definitely a particular wavelength is required. Similar way, we need a threshold in a nerve impulse generation. That is because of what? Permeability and electrical signal has to be give this threshold. Okay, now our basic is very clear right now. Yes, my dear students, now let's go to the membrane potential. Now, membrane potential. So before I go membrane potential, what is membrane potential? Now, first of all, what is this? I told you the direction of the impulse is going to pass like this, right? So I'm going to use these things, okay? So first, a resting potential.
रेस्टिंग पोटेंशियल, जहाँ पे न्यूरॉन क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, कोई हड़बड़ी नहीं है वहां पे, कोई गड़बड़ी नहीं है वहां पे, दैट इज -90 MV। अरे बाप रे, दैट इज माइनस, यस। सो व्हेन आई एम जूम दिस, ये क्या है, न्यूरॉन के अंदर वाला पार्ट। तो ये कौन सा चार्ज शो करेगा, दिस इज नेगेटिव चार्ज। एंड बाहर, बाहर मतलब ECF में, इलेक्ट्रो, इसमें राइट क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो रेस्टिंग पोटेंशियल इज द वन वेयर द न्यूरॉन, देयर इज नो जनरेशन ऑफ द इम्पल्स, न्यूरॉन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, दैट्स कॉल्ड रेस्टिंग पोटेंशियल। अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, सो 0, 20, 40, 60, -20, -40, minus, let's take 80 and -90, and here again 0. Okay, so now when you talk about this, so what is happening, the resting potential is where right now, -90. So I'm going to draw the line. This is what, resting potential, let's denote it by A. This is your A, this is your A. What is it, resting potential, what is that value, -90. Now, resting potential is there. Now we have studied the resting potential, right? So inside charge is what? Negative. Because of what? We're going to talk about what causes the membrane potential. Okay. Now let's talk about the action potential. For the action potential, we need a threshold, and who is responsible for that? So there are two things are responsible for that. So resting potential -90. So for action potential, the first one is responsible your sodium ion, and the second one is potassium ion. So in case of sodium, see right now there is a minus charge inside. If there is a minus charge inside, who is inside? Potassium is inside and sodium is outside. Okay. So now sodium is where? Outside. Potassium is where? Inside. So potassium is more negative. Okay. Why? We'll talk about that. So अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, बाहर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज फॉर श्योर, राइट? So sodium is responsible for action potential, and the potassium is your responsible for your action potential, right? So let's start about it. So sodium is your responsible for your depolarization. तो ये वर्ड कहाँ सुना था? What is nerve impulse? The depolarization wave. So sodium is coming inside, that causes the action potential that leads to -90 MV millivolt to the +30 or 40. Okay, but what is that? Depolarization is getting, sorry, resting potential is disturbed because of depolarization caused by sodium. So what we can talk about? Sodium influx, sodium ion inside, influx is there, and potassium is efflux, or we can say outside they are going, right? Because if the sodium is coming out inside the potassium, there is a disturbance of the charge. Okay, so potassium, who is going to take? So sodium is responsible for depolarization, potassium is responsible for repolarization. Okay, he will try to get that -90 resting potential again. So this is cause the action potential. Who cause the action potential? The entry of the sodium. That is the first point. Who want to maintain the repolarization? Potassium. Okay, so the moment the entry is happening, the potential is become positive. Can you see the spike? It's towards positive. Okay, but repolarization is going to back it again, right? तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. अरे बट यहाँ पे तो ट्विस्ट आ गया. What is that? What is this? बोलो. A, your B is depolarization, indicated by depolarization. Your C is repolarization, that I have drawn here. So A is resting, B for inside, sodium is coming inside. I can write here sodium entry, potassium is going outside, that causes the C. But ये spike कहाँ से आ गया? That spike is known as positive over potential. Positive over potential. See, वो कुछ नहीं है. It's a very, very small fluctuation we can talk about. Okay, or it's a small potential, very small potential, and it's a terminalization spike. Why it's called spike? See, very simple. It is not stopping here at 90, it's going down
So it become little negative, and then it's going to remain the resting potential. So the membrane potential is going to happen like this. It is on rest, that is minus 90 MV. Nothing is happening there. Rest pe hai. What going to happen? Suddenly the sodium is coming into the, try to come into the inside. It causes the action potential. And then repolarize, that is depolarization. The repolarization done by potassium, it's coming down. But while coming down, जैसे ही कम आ रहा है वो क्या हो रहा है, स्पाइक्स दे रहा है. डायरेक्टली माइनस 90 नहीं मेंटेन करेगा, क्या करेगा, positive or potential, it will be given by that. Okay, so this is the membrane potential that we just understood. Now let's talk about who causes the membrane potential. आपके पास तो आंसर है ना, सोडियम एंड पोटेशियम permeability. So what are the gates, what are the pumps, let's talk about. Just give me 1 minute to wipe up this. Okay, but so now we're going to talk about the membrane potential cause. So who is responsible for, as we discussed, the permeability of the sodium and potassium. Okay, so now when you talk about the membrane potential causes, the first one is responsible for the leaky channels. Yes, इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा. They are the leaky channels, right? अगर हम न्यूरॉन निकालें यहाँ पे, ओके, सो सोडियम बेचारा ज्यादा लीकी चैनल्स नहीं है इसके पास, but permeability of the potassium is very very high. So can I say that because of this leaky channel, the sodium entry is not that much good as compared to the potassium. Potassium बहुत ज्यादा अंदर आते चले रहते हैं, ठीक है. So this potassium permeability, can I say that permeability of potassium is very high, and because of this, it almost give you minus 84 millivolt. Because of potassium permeability, how much millivolt is given or resulted is minus 84. So sodium and potassium both are there. But in case of leaky channels, the potassium permeability is much more higher. Okay. See, in action potential, what we talk about, sodium depolarization, potassium repolarization. Remember that. So now this leaky channel, there is no control over. तो कोई भी आता जाता रहता है, लेकिन पोटेशियम सबसे ज्यादा अंदर की तरफ रहेंगे, तो क्या रहेगा चार्ज, माइनस. ओके, एंड सोडियम बाहर है तो पॉजिटिव चार्ज. ये पॉइंट क्लियर है. नाउ दिस लीकी चैनल कोई कंट्रोल नहीं है, राइट? थोड़ा तो कंट्रोल करना चाहिए. तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? देयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टेकन बाय द electrogated channel, or we can say the pump. Which pump? Sodium potassium pump is responsible for that. But this is not that much effective. Okay, so it will give you minus 4 millivolt only. So what is this pump? Talk about that. Okay, when we talk about this, we know that one part is embedded, one part is here. So what is this? This is your outside is ECF, inside is this. So inside right now, what is happening? Say action potential is occurred, disturbance got. So because of the disturbance, potassium was inside, stability, resting potential. But when disturbance occur, they're coming out. But right now, action potential is done. Repolarization start. So बाहर क्या है, पोटेशियम है, उसको अंदर लाना है. बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, अगर पोटेशियम 3 अंदर आएंगे, ठीक है, सोडियम को बाहर डालना है, पोटेशियम को अंदर डालना है. बट यहाँ पे आयंस का डिफरेंस है, इसलिए तो माइनस एंड पॉजिटिव, ये डिफरेंस है ना. तो देखो पोटेशियम क्या था, अंदर था बहुत ज्यादा, माइनस 90, माइनस कर रहा था चार्ज, और बाहर क्या था, पॉजिटिव. तो इक्वल अमाउंट में तो ला नहीं सकते. सो अगर 2 सोडियम बाहर जा रहे हैं, तो 3 पोटेशियम अंदर आएंगे, with the expenditure of definitely ATP, that breaks down ATP into what? ADP and INTP. Is that clear? Leaky channels आ रहे जा रहे हैं. Electrocated perm और सोडियम पोटेशियम perm, ATP is required. सबसे ज्यादा माइनस 90 MV ये रिस्पॉन्सिबल है. ये क्या कर रहे हैं, -4 कर रहे हैं.
ओके, दैट इज क्लियर। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वोल्टेज गेटेड चैनल। ओके, वोल्टेज गेटेड चैनल। सी, ये जो लीकी चैनल्स है एंड जो इलेक्ट्रो गेटेड पंप है, सोडियम पोटेशियम जो पंप है, दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन पोटेंशियल। ये नॉर्मल वे में चलता है। ओके, दिस इज गोइंग ऑन। बट जब ये एक्शन पोटेंशियल होगा, हु इज रिस्पॉन्सिबल? दिस वोल्टेज गेटेड चैनल। So this point is very clear to you. Okay. So now voltage gated channel में first कौन आएगा आपका? First आएगा आपका सोडियम। बट सोडियम के दो गेट है। Okay, two gated. Sodium is what? Two gated. And here potassium is what? Only one gated is there. Okay, my dear students, remember these things what we have just talked about. Okay, I'm writing this two gated here. What that spike is all? Resting potential above, that is depolarization, sodium come inside, right? Then potassium exchange, obviously disturb हो गया तो फिर से आएंगे ना potassium, spike over, I mean that positive over, and again this. Okay, so now this action potential we're going to talk about. This is responsible. Leaky channels and electrogated pump or sodium potassium pumps are very normal ones, right? ये लीकी है तो इसको थोड़ा सा बहुत ये करा तो ये चार्ज कर रहा है, लेकिन who is actually responsible for the action potential? Your voltage gated channel. Okay, so when we talk about the sodium has two gated channel. First is the activated channel or activated gate. So let's talk about this. Okay, यहाँ पे एक पॉइंट मैं भूल गया। देखो, ये इसका एक लार्ज यूनिट रहेगा, इसका ये स्मॉल यूनिट रहेगा। ये एंट्री है पंप की। ओके, नाउ इन हियर सेम वे वी कैन टॉक अबाउट। ओके, एंट्री है ना यहाँ पे गेटेड है, तो फर्स्ट इज एक्टिवेटेड वन। ओके, दिस एक्टिवेटेड वन ओनली एक्टिव, ओनली एक्टिव ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल, जो कि -90 MV को लेके जाएगा +35 MV तक, और 40 तक भी लेके जा सकता है, बट एक आर्बिट्री वैल्यू यहाँ पे दी है इन योर एनसीईआरटी। -90 MV टू +35 लेके जाएगा ऑन एक्टिवेटेड चैनल। ये क्लोज रहेगा ड्यूरिंग योर रेस्टिंग पोटेंशियल। During the rest, this will be the close. Okay. And the one is inactivated gate, which is definitely क्या रहेगा? It is on. During what? On. During resting potential. लेकिन ये क्या रहेगा? This is very fast. This is low phase. Because it will trying to what? Trying to what? It will be trying to put the balance between that sodium and potassium, right? ये पंप है, लेकिन ये क्या है? वोल्टेज गेटेड चैनल है, तो ये क्या रहेगा? स्लो एक्टिंग रहेगा। ओके, सो दिस इज द अपर पार्ट विच इज क्लोज रहेगी ड्यूरिंग, ड्यूरिंग ओनली, दिस इज ड्यूरिंग एक्टिवेटेड ओनली ड्यूरिंग व्हाट, विच इज द फास्ट ड्यूरिंग ओनली व्हाट, एक्शन पोटेंशियल। अदरवाइज ये क्लोज रहेगा ड्यूरिंग रेस्ट पोटेंशियल। ऑन कौन रहेगा? एक्टिवेशन में। ओके, नाउ इन केस ऑफ सोडियम only one gated channel is there, and that is responsible for or your what? Definitely to bring potassium ion back. Okay, but during rest position it is close. So only action potential disturb हो गया, इसलिए तो चालू कर रहा है ना ये, and it will try to make the resting potential -90 MV. Okay, so in nutshell दिस लीकी चैनल्स आर वर्किंग, उसके लिए कौन है? सोडियम पोटेशियम पंप है। ओके, बट ये इतना इफेक्टिव नहीं है, हमें एक्शन पोटेंशियल चाहिए, थ्रेशोल्ड चाहिए। दिस permeability leads to the threshold, that once the threshold is reached, the spike is going up, that is -90 to +35 हो जाएगा। क्या हो गया? एक्टिवेटेड चैनल्स हो जाएंगे, सोडियम के चैनल खुल जाएंगे, तो सोडियम इज कमिंग इनसाइड, चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, इम्बैलेंस हो गया। पोटेशियम हैज टू बी गो आउटसाइड, राइट? पोटेशियम कौन क्या है यहाँ पे? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टॉक अबाउट इज दिस। देखो, पहले क्या केस था? नेगेटिव चार्ज इनसाइड था, पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड था। ओके, और ये तो होते रह रहा है, ठीक है, टू मेक इट पॉसिबल। बट जैसे ही एक्शन पोटेंशियल हो गया, व्हाट इज हैपनिंग? पॉजिटिव चार्ज इज इनसाइड, नेगेटिव चार्ज इज आउटसाइड, राइट? बट अभी जैसे ये डिस्टर्बेंस हो गया,
डिस्टर्बेंस हो गया तो उसको फिर से क्या, अभी देखो नेगेटिव पॉजिटिव, फिर से हमें क्या अंदर क्या करना, -90 करना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से माइनस अंदर होना चाहिए, पॉजिटिव बाहर होना चाहिए। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल, पोटेशियम आना चाहिए ना अंदर और सोडियम जाना चाहिए बाहर। यहाँ पे क्या था, सोडियम अंदर था और पोटेशियम बाहर था। Are you getting my point? So who is responsible for the action potential? Your voltage gated channel. So let's revise. What is now impulse? A depolarization wave caused due to the permeability of the sodium potassium ion, and that permeability leads to the electrical signal. And this permeability and this electric signal cause the threshold, and particular threshold is responsible for action potential. एक्शन पोटेंशियल इज व्हाट, -90 to 35 तक जाएगा। उसके बाद पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल में आ जाएगा, ओनली वन इज देयर, ब्रिंग्स बैक। एंड जो ये लीकी चैनल्स है और इलेक्ट्रोपम्प्स है वो नॉर्मल वे में चलते रहते हैं। दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर टू यू। सो टुडे वी लर्न अबाउट द nerve impulse, how it actually transferred, right? And we also clear what, synaptic cleft and what is synaptic difference. Okay, so I hope this lecture is very useful to you. Thank you so much for paying attention.